नमस्कार, आप देख रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं संतोष यादव। इस वक्त की बड़ी खबर है, असम के कोकराझार दौलमोरा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने नो रोड नो वोट के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि कई वर्षों से ये लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में असम सरकार और बीटीआर के प्रमुख प्रमोद बोड़ो और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को डिप्टी कमिश्नर के जरिए ज्ञापन सौंपा है। तकरीबन 500 से अधिक लोगों ने आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में इन लोगों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द अगर सड़क का निर्माण और निरीक्षण नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन होगा और आने वाले चुनाव में ये लोग वोट नहीं देंगे। इसका खामियाजा वर्तमान सरकार और बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोड़ो को भुगतना पड़ेगा। दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दिखा रहे हैं असम के कोकराझार की तस्वीरें हैं। दौलमोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सड़क के निर्माण को लेकर लोग आज प्रोटेस्ट निकाले, धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का मांग है कि कई दिनों से, कई वर्षों से ये मांग की जा रही है कि सड़क को निर्माण की जाए ताकि मासूम की जिंदगियों में ये सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और आने आवागमन में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। स्कूल में आने जाने वाले छात्र और रोगियों के लिए एम्बुलेंस की आवाजाही पे काफ़ी असर पड़ता है और इसको देखते हुए आज सैकड़ों लोगों ने रैली निकाला है और इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द सड़क का निरीक्षण किया जाए और वर्तमान में जो सड़क का हाल है उसे सरकार को नज़र बनाए रखना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में अगर जल्द से जल्द सड़क का निर्माण नहीं होता है तो ये लोग आने वाले समय में वोट नहीं देंगे। इन लोगों का साफ तौर में मांग रहा नो रोड नो वोट, नो रोड नो वोट के नारे लगाकर और साथ में बैनर लेकर लोग जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और साथ ही इन लोगों ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोड़ो के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। आइए सुनवा लेते हैं इन लोगों का मांग क्या है। আজিৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়ে মানে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে অলপ মানে চাই চকু মেলি আমাক অলপ সকাহ দিয়ে ৰাইজক আমাৰ, আৰু যদি এইখিনি কৰি নিদিয়ে তাহলে আগন্তুক আমাৰ MCLA ইলেকশ্যনত আমাৰ সমূহ ৰাইজে আমি ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমাৰ ৰাইজে। কি কাম এইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ কিবা চামাৰপাৰা গাঁও হয়। আজি মই মোৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে আমাৰ চামাৰপাৰা গাঁৱৰ হৈ ময়ো ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আজি দেখি আহিছোঁ ভাৰত স্বাধীনতাৰ আজি দশক বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যিখন গাঁৱত আজিলৈকে এটা ৰাস্তাত এটা শিলগুটিও পৰা নাই, সেইখন গাঁৱৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আজিৰ তাৰিখত আজিৰ প্ৰজন্মই অলপ ভাবি চালে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। সেয়ে গাঁওবাসীৰ হৈ ময়ো ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদত। তো এইখিনিতে মই আমাৰ অসমৰ সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো মই আহ্বান জনাম যেন এইখন গাঁও, আচলতে এইখন গাঁও হ'ল বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত, কোকৰাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হয়। এইখন গাঁৱত আমাৰ 100% কোচ ৰাজবংশী হয় আৰু সেইবাবে হয়তো আমি ভাবিব লগা হৈছে যে সেইবাবেই হয়তো আমাৰ এই ৰাস্তাৰ কোনো ডেভেলপ নাই, গাঁওখনৰ কোনো শৈক্ষিক ডেভেলপ নাই বা এম্বুলেন্স সেৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব এইখন গাঁৱত য'ত নেকি বাৰিষাৰ দিনত এখন চাইকেল এইফালেদি এইখন গাঁৱৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। আজিৰ যুগতো এনেকুৱা এখন যদি গাঁও থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে উন্নতি ক'ত, চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন ক'ত, চৰকাৰে ডাঙৰ কথা কোৱা সেই নেতাবিলাক ক'ত?
তো মই পুনৰবাৰ আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিটিআৰৰ চিফ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আপুনিও অলপ যেন চকু দি এইখন গাঁৱৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা শৈক্ষিক ব্যৱস্থা বা চিকিৎসা সেৱা ব্যৱস্থা এইবিলাক মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তাকে আহ্বান জনাইছোঁ খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ ব্ৰেকিংৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24/7